Good morning, everyone. I am Divya Agarwal. I am a student of Sanatan Dharam College, Ambala, Kent, and my topic for today is Section 137 of the GST Law, Offences by Companies. Section 137 is divided into four subsections. Subsection 1 tells us about the offences by companies. Subsection 2 tells us about the persons to be held liable for offence. Subsection 3 tells us about the liability of partner or karta or managing trustee. Subsection 4 tells us that there would be no punishment if offence was committed without knowledge. So this was a brief introduction of section 137. Now we will study all these four subsections in detail. Section 137 subsection 1 offences by companies. Where an offence committed by a person under this act is a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. मतलब कि सबसेक्शन 1 हमको ये बताता है कि जब ऑफेंस हुआ, अगर तो ऑफेंस हुआ है और ऑफेंस करने वाली एक कंपनी है, तो जिस समय ऑफेंस हुआ उस समय कंपनी का जो भी इंचार्ज था और जो भी रिस्पॉन्सिबल था कंपनी का बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, वो लोग कंपनी के साथ साथ वो लोग भी उस ऑफेंस के लिए गिल्टी माने जाएंगे और उनके अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग्स होंगी और वो उनको भी पनिशमेंट मिलेगी. Section 137, subsection 2, persons to be held liable for offence. Notwithstanding anything contained in subsection 1, where an offence under this act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any negligence on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. We will understand this with the help of a diagram. So, the director, manager, secretary and other officer of the company, वो लोग तभी liable होंगे अगर तो जो offence है वो उनके consent या उनकी negligence की वजह से हुआ है. मतलब कि इन शॉर्ट अगर तो जो ऑफेंस है वो इंटेंशनल था, उनकी कंसेंट की वजह से हुआ था या फिर उनकी कोई गलती या नेग्लिजेंस की वजह से हुआ था, तभी वो लोग लायबल होंगे. और वो लोग लायबल नहीं होंगे इफ़ द ऑफेंस हैज़ नॉट बीन कमिटेड विद देयर कंसेंट और नेग्लिजेंस. मतलब उनके कंसेंट और नेग्लिजेंस की वजह से वो ऑफेंस नहीं हुआ है तो वो लोग लायबल नहीं होंगे. Section 137 subsection 3, liability of partner or karta or managing trustee. Where an offence under this act has been committed by a taxable person, being a partnership firm or a limited liability partnership or a Hindu undivided family or a trust, the partner or karta or managing trustee shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. And the provisions of subsection 2 shall mutatis mutandis apply to such persons. Here mutatis mutandis means as it is. मतलब कि word to word subsection 2 के जो provisions हैं वो इस section पे भी, इस subsection पे भी apply होंगे. इस सबसेक्शन में हमको ये बताया है कि जो अगर तो ऑफेंस किसी टैक्सेबल पर्सन से होता है, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म या फिर एलएलपी या एचयूएफ या कोई ट्रस्ट, तो जो उस केस में जो पार्टनर होगा एलएलपी का या फिर पार्टनरशिप फर्म का, जो करता होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, और जो मैनेजिंग ट्रस्टी होगा ट्रस्ट का, उन लोग को हम लोग गिल्टी मानेंगे और उनके अगेंस्ट ही प्रोसीडिंग होगी और उनको ही पनिशमेंट मिलेगी. नाउ subsection 4, no punishment if offence was committed without knowledge. Nothing contained in this section shall render any person liable to any punishment provided in this act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. मतलब कि अगर तो कोई ऑफेंस होता है और वो पर्सन ये प्रूव कर देता है कि जो ऑफेंस है वो उसकी नॉलेज के बिना हुआ है और उसने पूरी डिलीजेंस से काम लिया था उस ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए, तो उसको हम लोग लायबल नहीं कह सकते. वो किसी भी उसके लिए पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होगा.
Explanation for the purpose of this section. Company means a body corporate and includes a firm or other association of individuals, and director in relation to a firm means a partner in the firm. Conclusion. From the above explanation of Section 137 of the CGST Act, it is understood that the director, manager, secretary, and other officer of the company are held liable, proceeded against, and punished if they are involved in any offences committed by their companies. मतलब कि सेक्शन 137 से इन शॉर्ट हमको यही पता चलता है कि जो भी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या और कोई ऑफिसर है कंपनी के, वो लोग लायबल होंगे, उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग होगी और पनिश भी होंगे वो लोग अगर तो वो किसी भी ऑफेंसेस के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं जो उनकी कंपनी से हुए हैं. And in case of directors, such directors may not be exclusively whole-time directors but also include non-executive and independent directors. ठीक है. फॉर रेफरेंस पर्पस ये सारा डेटा मैंने कलेक्ट किया है वीके पब्लिकेशंस की बुक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से एंड द रेस्ट फ्रॉम इंटरनेट, जिसकी वेबसाइट मैंने आपको पीपीटी में प्रोवाइड कर दी है. सो थैंक यू एवरीवन.